Hello, good afternoon. I hope you are fine. Today we are starting our next class of the rotation motion unit 5, physics of 11th class. So in last class we discussed about their moment of inertia. कि moment of inertia क्या होता है? Where we are using this one. Then today we will do some relation with their moment of inertia and angular momentum, moment of inertia and kinetic energy. Okay, after that we will discuss their theorems of the moment of inertia, perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. So first one, we will discuss the relation between moment of inertia and angular momentum. So how we can find their relation between them? So as we know that first we should know about the relation between angular momentum and linear momentum. We discussed already in last class क्या relation होता है दोनों में relation. As we know L equal to R cross P. This one relation we discussed already in last class. So here we know about this one linear momentum P we can write there mv. So as we are talking about their scalar term without their vector form, so we can write there L equal to here P R and put value of P from here. Then after putting then L we can write there mv R. Like this one we can write there. Okay, so here we can write there V we can write there. As we know here हमें रिलेशन चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और एंगुलर मोमेंटम में. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. ओके, तो कहीं से इसको रिलेशन को ऐसे चेंज करना है कि हम इसको क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज कर सके. मास इज हियर r इज देयर बट नीड ऑफ 1 r आल्सो. अगर यहाँ एक r और मल्टीपल हो जाए सो एम आर स्क्वायर को हम क्या यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ I पुट कर सकते हैं. तो कहाँ से आएगा? फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट देयर v इन फॉर्म ऑफ द एंगुलर. v को एंगुलर के फॉर्म में चेंज कर दो. v क्या हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, सो दिस v वी कैन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. So about this one relation between them, we know about this one v equal to omega r. As we are putting value of v in this one relation, put value here. This one your important relation. This also you should learn. L equal to mvr. Put value of v in equation first. So after putting this one, then L we can write there m omega r. Then r only we can write. So here we can write there m omega r square. तो L हमारे पास क्या आ जाएगा? m omega r square. So from here we can take out this one m r square and m r square we can write it moment of inertia. तो L हमारे पास क्या आ जाएगा? L equal to I ओमेगा. ओके, क्योंकि एम आर स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन राइट इट. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनटू ओमेगा. सो योर एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट देयर आई ओमेगा. सो फॉर द डिफरेंट क्वांटिटी देन वी कैन राइट देयर I1 omega 1, I2 omega 2. like this one we can write this one series will be Fourier I equal to up to n. This one your angular momentum and their moment of inertia relation between them. तो यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है एंगुलर मोमेंटम की. कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एज समवन विल बी डांस ओपन योर लेग. जैसे आप लेग को ब्रॉड करके अगर बॉडी को ओपन करके अगर आप डांस कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, देन स्पीड विल बी लेस एज कंपेयर टू क्लोजिंग योर बॉडी with each other. Then you will rotate, then your speed of our body will be large. Okay, during the jumping, swimming के टाइम अगर आप जंप कर रहे हो या कोई एनिमल अगर कहीं से जंप कर रहा है, फॉर एग्जांपल कैट इज जंपिंग फ्रॉम एनीवेयर एनी टावर, तो जंपिंग के टाइम क्या करती है? अपनी बॉडी को कंप्लीट को फोल्ड कर लेती है. फोल्ड करने का मतलब क्या होता है? उसका जो आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, वो क्या कर जाता है? वो डिक्रीज कर जाता है. अगर वो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? आपकी
v वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और विदाउट एनी एक्सीडेंट देन इट विल फॉल इजीली एंड इन लेस टाइम। पर जैसे ही वो गिरने लगती, गिरते हुए टाइम क्या होता है, आप बॉडी को स्ट्रेच कर दे, बॉडी स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, आर इंक्रीज कर जाएगा, आर इंक्रीज कर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बॉडी पे चोट लगने के चांसेस कम रहते हैं। सो हियर लाइक दिस वन एप्लीकेशन वी आर यूजिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग आवर नेचुरल लाइफ। ओके, next our relation between our moment of inertia and their kinetic energy, how we can find this relation between moment of inertia and kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, कौन सी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, ऑलरेडी हमने मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके। तो अगर बॉडी रोटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस वन बॉडी वी हैव टेकन आर्बिट्ररी बॉडी दैट इज मूविंग रोटेटिंग along with their omega, then here we are taking their fixed axis, this one is axis के लोग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। here we are assuming their different particles, system of particle we can say here r1 m1 m2 r2 m3 r3 m4 r4, this one our system, and in this system having many number of the particles are there and all are rotating with the omega. So here we are assuming there, we are writing there, let a system in rotation motion, let a system in which many particles are present which are rotating with angular velocity, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो लेट दीज पार्टिकल्स, नाउ लेट m1 m2 m3 mnth particles whose perpendicular distance from axis of rotation are r1 r2 r3 respectively, जिनका axis of rotation क्या है, r1 r2 r3 respectively, here we can write there respectively. So here we can write there, then kinetic energy, as we know their kinetic energy in this case, as we know kinetic energy in linear motion, we can write their kinetic energy equal to half mv square. Okay, so body is a rotating in a rotational form, so that's why we will convert this one energy in form of the rotation by converting this velocity in form of the angular velocity. So how we can convert this one, there should relation, as we know relation between
linear and angular velocity. दोनों में क्या रिलेशन है? फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दिस वन रिलेशन बिटवीन देम, देन ओनली वी कैन कन्वर्ट v equal to omega r. Okay, this is a relation between linear angular velocity. So kinetic energy we can write there, kinetic energy equal to half mv square. So by converting this one v linear to angular form, then put value of v here as 4 particles m1 m2 m3 like this one particle, then kinetic energy we can write there 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square plus 1 by 2 m3 v3 square up to your nth पार्टिकल के लिए हम ये लेके चलेंगे. सो एज वी आर कन्वर्टिंग v इन फॉर्म ऑफ द ओमेगा, देन वी कैन राइट देयर m1 ओमेगा r1 square, v equal to omega r, then put value of v equal to omega r, then of its square, then here also we can write its square plus 1 by 2 m2 omega square r2 square plus 1 by 2 m3 omega square r3 3 like up to infinite. So from here we can write there. Now as we know about this one moment of inertia equal to your mr square. ये हमें पता है moment of inertia क्या होता है, हमारा mr square होता है. So as we are putting mr square here, then kinetic energy in rotational motion, then 1 by 2 m. इस रिलेशन को क्या यूज करेंगे हम? I यूज करेंगे. mr square we can write their moment of inertia. So here this relation we can write there I omega square plus 1 by 2 I 2 omega square plus 1 by 2 I3 omega square up to like this one, it will be till infinite. So this one will be rotational kinetic energy in our rotational motion. So total, as we are writing there sum up of this kinetic energy in rotational motion, we can write there 1 by 2 I omega square I equal to here I1 to up to nth. This one will be our total kinetic energy that is in rotational motion. As body will be there, for example, as we are taking this one inclined plane at any angle theta, then body is sliding on this one. अगर body सिर्फ slide करते तो हम क्या यूज करते हैं? Kinetic energy will be our half mv square. But if body will be sliding as well as the rolling also, बॉडी क्या करती है? स्लाइड भी कर रही है, रोल भी कर रही है इसके ऊपर विद हेल्प ऑफ द ओमेगा, देन देयर टोटल एनर्जी विल बी एक्ट देयर एज बॉडी स्लाइडिंग एज वेल एज रोलिंग. ओके, रोल भी कर रही है अलोंग एक्सिस of rotation. Along rotation, so total energy we can write there, total energy we can write there kinetic energy in linear motion plus kinetic energy in rotational motion. It will be our total energy. So this total energy in form of the mathematically we can write there 1 by 2 mv square plus 1 by 2 I omega square. This one will be our total kinetic energy in case of body is a
rolling on this one inclined plane. इस बॉडी इसके ऊपर रोल करते 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 क्या कर रही है, वो नीचे आ रही है, वो स्लाइड करती जा रही है. सो लीनियरली डिस्टेंस भी कवर कर रही है, वो यहाँ से यहाँ तक कवर भी कर रही है और उसके साथ साथ क्या कर रही है, रोल भी कर रही है. So due to the rolling, the rotational energy will be there. As sliding down on this inclined plane, then their kinetic energy, linear kinetic energy will be there. So total energy we can write there half mv square plus I omega square. I hope you understood from where this one written half I omega square. Okay, where I is a moment of inertia of the body which is a rolling on this one. तो body कैसे हो सकती है आपकी, slender भी हो सकती है, sphere भी हो सकती है, any ring also will be there. So moment of inertia we will use according to the type of the body which is sliding on the inclined plane. Okay, so I hope you understood this one topic beta. Now next our theorem of the moment of inertia. There are the two theorem of the moment of inertia. This one is a perpendicular axis theorem, second will be parallel axis theorem. First we will discuss about their perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. So as we are taking any body which is a rotating along a fixed axis, कोई body है वो क्या कर रही है, वो rotate कर रही है fixed axis के along. That axis can be along x axis, can be y, can be z. Okay, so here this one body is a rotating along this one axis. इस axis के along क्या कर रही है, rotate कर रही है with the omega. Now here three axes of the body is a possible. One can be along y axis, one can be along your z axis. अब एक एक्सिस क्या है, ये वाला है. अगर ये वाला एक्सिस हम क्या लेके चल रहे हैं, y के along लेके चल रहे हैं. दिस वन एक्सिस हियर x axis is acting there, then third one axis of the rotation will be there along z axis. जो third जो axis रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, x के along रहेगा. third is axis along your z axis. This one our I acting along z axis. तो कोई बॉडी है ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है इसके along, रोटेट कर रही है with the omega. So along this one we will find their moment of inertia of the one axis of the rotation in form of the another two axis. So how we can write this one according to this theorem, according to perpendicular axis theorem. According to perpendicular axis theorem, moment of inertia of one axis is equal to sum of another two axes which are perpendicular with each other. जो क्या आपस में perpendicular है, perpendicular with each other. So this one theorem is your perpendicular axis theorem. So mathematically we can write this one theorem. We can write this theorem I along z, along इसके एक्सिस के अलग अलग along हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो इस एक्सिस के along क्या हो जाएगा, I y इक्वल टू सम ऑफ अनदर टू एक्सिस I x plus I z. So like this one we can write their moment of inertia of any ऑब्जेक्ट की एक एक्सिस के along मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सम ऑफ अनदर टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर. अगर आप इसके along फाइंड करना चाह रहे हो तो इसके along क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द जेड एक्सिस इक्वल टू सम ऑफ अनदर टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर. दो रिमेनिंग जो दो साइड है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर रहेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस साइड का किसके इक्वल हो जाएगा, आई वाई प्लस आई एक्स. Or we can write there iz equal to our ix plus iy. This one our perpendicular axis theorem. You can understood better with the help of the examples. If you want to find out moment flow of inertia of any axis which is along the in the ring, in sphere, that in cylinder, in hollow sphere, different shape will be given in your book. Then there
we will use this one theorem to find any axis which is perpendicular to the remaining two side. So next will be parallel axis theorem. हमारे पास दो थ्योरम है इसके अंदर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस, ओके, जो पैरेलल है किसके पैरेलल है, जो एक्सिस सेंटर के अलोंग जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, जिसके अलोंग क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, उसके जो पैरेलल जो एक्सिस रहेगा उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस अलोंग विच बॉडीज आर रोटेटिंग प्लस mass of that particle and distance, square of the distance between these two parallel axes, that we will call it parallel axis theorem. Okay, so how we can write there one is our body is there, then here moment of inertia of this one body along this axis of rotation, let we are taking there, this one is a rotating with help of this one, let its moment of inertia we are taking AB, its side A and this one our B. तो ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या है, ये बॉडी रोटेट कर रही है इस एक्सिस के लोंग, किस एक्सिस के लोंग, ए बी एक्सिस के लोंग, ए बी हमने कोई एक्सिस लिया जिसके लोंग क्या कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है. सो अनदर वन इज एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, लेट हियर वी आर टेकिंग दिस वन एक्स वाई एक्सिस. इसके अलोंग अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं और जो कि क्या है, पैरेलल है इस एक्सिस के अलोंग, जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. सो हाउ वी कैन फाइंड देयर, इफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट हियर h distance if we are taking between them, and if m is a mass of this body, so how we can apply their parallel axis theorem. So according to this theorem, according to this parallel axis theorem क्या कहती है theorem, now moment of inertia of parallel axis कौन सी, किसके पैरेलल, जिस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, उसके पैरेलल जो एक्सिस रहेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करना चाह रहे हैं. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस which is parallel to axis of rotation is sum of moment of inertia of axis of rotation of the body and product of mass and square of the distance between them. So this one theorem is known as the parallel axis theorem. तो इस theorem के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, so mathematically we can write it moment of inertia along this parallel axis, क्या है parallel axis, xy equal to sum of the moment of inertia of those axes which is parallel to it passing through the center. So इसके अलोंग क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस मास ऑफ दिस वन, मास क्या है आज हम अज्यूम करके चल रहे एम, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो इट विल बी आवर h distance, so square of this one, then we can write there m h square. So this one we will call it parallel axis theorem. For find out the moment of inertia any axis which is parallel to the
गिवन एक्सिस, जिस एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है उसके अलोंग कोई पैरेलल एक्सिस, उसके अलोंग पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड करना है, सो वी विल यूज देयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, देन वी विल यूज देयर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अदरवाइज वी विल यूज देयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो दीज टू थ्योरम वी विल यूज फॉर फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the different bodies which we are given in our book, that sphere, slender, ring, hollow sphere, hollow slender, square, rectangle. These different shape will be given our book, so that's why we will use there. So in next class we will discuss about these shapes, different shape of the body will be given, then how we can find their moment of inertia of the body. I hope you understood. Thank you for watching today our video.